and welcome back to Class of Physics by Ashish Sharma sir. Here again I am back with a new video, that is applications of Biot-Savart law. We have already discussed in previous videos the two applications. Now the third one is important also. थोड़ा सा difficult है, कोशिश कीजिए और I am sure till the end you will be very clear about this concept. So don't forget to watch the video till the end. So here we are finding the magnetic field at axial point of the current carrying circular loop. Right? Loop कैसा है? ये देखिए. Current carrying loop we are taking. Right? It is like this. This is the axial point. Axial line. Its axis. यहाँ हमको कोई पॉइंट हमने ले लिया है एक्सिस पर, वहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. ये देखिए P पॉइंट हमने लिया है. यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने थिक लाइन बनाई है वो आपके तरफ है, राइट, फेसिंग यू, एंड दिस डॉटेड लाइन ऑफ दिस इज एट द बैक. कंफ्यूज नहीं होंगे, बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है. ये जो थिक लाइन है ये आपके तरफ है, तो हमने डीएल एलिमेंट ले लिया. एक ऊपर हमने डीएल एलिमेंट लिया है, उसके अपोजिट एक डीएल एलिमेंट यहां भी होगा. यहां यदि डीएल एलिमेंट ऐसे लिया है तो इसके अपोजिट एक अंदर भी जा रहा होगा. यदि हम डीएल एलिमेंट यहां लेते हैं जो करंट यहां लेकर आएगा, तो इसके अपोजिट भी एक डीएल एलिमेंट होगा जो करंट को ऊपर लेकर जाएगा. यहां देखिए करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो करंट नीचे की तरफ यहां है तो इसके अपोजिट यहां ऊपर की तरफ होगा. सो फॉर एवरी डीएल एलिमेंट देयर विल बी one more DL element which is exactly at the opposite side of that element. Okay, so here you see now this DL is current is towards you, right? Here it is opposite side. So जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट P पर, तो आप पाएंगे कि यहां ऊपर और नीचे का जो एक कंपोनेंट है दैट गेट्स कैंसल्ड, राइट. बाकी सारे एलिमेंट्स के एक कंपोनेंट है ऐड होकर हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. कैसे? हमने P पॉइंट लिया है जो DL से S डिस्टेंस पर है. सेंटर से पॉइंट P इज एट डिस्टेंस R. नाउ यू सी दिस इज एंगल phi which is made at point P. Opposite to it again there will be angle phi. Now what about the direction of magnetic field at point P? Because then only you will find the magnetic, you will be able to find the magnetic field at point P. कैसे? Right hand thumb rule, or even you can find out by screw rule also, right hand screw rule. क्या करते हैं हम right hand screw rule में? अब देखिए ये जो आपका DL एलिमेंट है it is coming out ऐसे, right? This DL element is like this. S is this. Okay, now when you rotate screw like this from here to here, you see my thumb where it is going, that side. Rotate from here to here, you will be finding that side. ये एक प्लेन में हुआ. DL element S is in one plane. The direction of magnetic field here will be like this. That means perpendicular to the plane containing DL and S. You see this is perpendicular. If this is perpendicular, you see this is angle phi, this total is 90 degree, so this is 90 minus phi. Obviously this one including this is 90 degree, this is 90 minus phi, obviously this will become phi. Okay, तो phi कहां से आया? ये देखिए हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो जो एंगल बचा यदि ये फाई ले लें तो ये 90 माइनस फाई, और ये 90 डिग्री बना रहे हैं और ये 90 माइनस फाई है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी फाई. नाउ यू सी दिस dB is in this direction, it is resolved into two components, dB cos phi and dB sin phi. Similarly for this also you will have dB in this direction resolved into two components, dB cos phi, dB sin phi. It does not mean while finding the total magnetic field कि आप dB sin phi plus dB sin phi 2 dB sin phi and then you integrate. No, ये तो हमने आपको हर एक एलिमेंट के अपोजिट एक कंपोनेंट मिलेगा, और आप देखिए dB का एक जो कंपोनेंट है dB cos phi अपोजिट, dB cos phi this side. That means they will cancel their effect.
वी आर हैविंग ओनली dB sin phi। तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट आप ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे, इधर लेंगे, सबके जो cos phi वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। केवल कौन सा ऐड करना है हमको, सारे सर्कमफ्रेंस में जितने पॉइंट dl एलिमेंट आप लेंगे उन सब का sin phi एलिमेंट आपको या कंपोनेंट आपको ऐड करना है। ओके, कैसे करेंगे देखिए। So using Biot-Savart law, the magnetic field at point P because of this ideal element will be how much? Mu naught upon 4 pi ideal sin phi upon s square, because the distance here is s. Okay, dl and s, they are perpendicular, so angle phi will be 90 degree. We can write this sin phi 90 is 1, so we have ideal upon s square multiplied by mu naught upon 4 pi. This is equation number 1. As I told you, we are getting two components of dB, that is dB cos phi, which is getting cancelled by equally opposite side component, and dB sin phi at axial point, which will be getting added up because of all the points there. So we will be finding total magnetic field by integrating dB sin phi, है ना। जो dB sin phi मिल रहा है वही हमको मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये हमको एक कंपोनेंट की वजह से मिला। ऐसे सारे कंपोनेंट पूरे सर्कमफ्रेंस पर जब ऐड करेंगे तो वी विल बी इंटीग्रेटिंग दैट। तो sin phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन s। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू इंटीग्रल dB की वैल्यू फ्रॉम 1 mu naught upon 4 pi idl upon s square into sin phi is a upon s. So b is equal to mu naught upon 4 pi, we will get I a upon s cube integral dl, which is equal to mu naught upon 4 pi I a upon s cube, dl is 2 pi a is radius of this. So we will be getting b is equal to mu naught upon 4 pi, how much we'll get, 2 pi, and this 2 pi from here it will cancel, so we will be getting mu naught upon 2 and I a square upon s cube. This is the resultant magnetic field, but you can substitute value for s also. How much? A square plus r square power half. So therefore b is equal to mu naught I a square upon 2, it is s cube, so a square plus r square power 3 by 2. This is the resultant magnetic field due to current carrying circular coil at the axial point. We can write its direction also, or in vector form what we can write, b is equal to mu naught I a square upon 2 a square r square 3 by 2 I cap. Why I cap we are writing? Because the resultant is in x direction here, so we have written I cap. If number of turns you take n, so it will be multiplied by n. Okay, so you can write also, if n is total number of turns, so b will be equal to mu naught ni a square upon 2 r square plus a square 3 by 2. This is the magnetic field, resultant magnetic field because of the circular coil, current carrying circular coil at its axial point. थोड़ा सा समझने का है, right? Thank you for watching the video till the end. Don't forget to watch the next videos. Again, important topic we will be dealing with under heading magnetic effect of current. Thank you everyone. क्या करना है? Don't forget to like, share, comment and subscribe the video. Thank you everyone once again.